Morning to all the parents and students. This is Praveen Shenoy sir from Mahesh Tutorials, and on behalf of Mahesh Tutorials, I would like to welcome you all. Dear parents and students, Mahesh Tutorials is now being managed and executed by the ZLearn. So basically, today Mahesh Tutorials is a division of MT Educare Limited, which we all know, plus the ZLearn. Today, I'm recording this small video basically for the students of 10th standard to understand what's next. Because with the recent announcements, many of the parents and students are quite confused कि अपने साथ आगे क्या होने वाला है. So let's understand कि what are the announcements or what are the views which have come from the Maharashtra State Board. Basically, there is a lot of confusion over the evaluation pattern of Maharashtra State Board for the students of Standard 10, as there are three different views circulating. The view number one is SSC result declaration will be on the basis of 9th standard evaluation plus 10th standard school exams which have been conducted throughout the year, plus the orals, the practical exams of 10th standard which have been taken throughout the year. So basically, they are going to follow the 50, 30, 20 formula. 50 for 9th, 30 for 10th written exams, and 20 for 10th orals and internals. What exactly it is, I will come to it later. The second view circulating in the state is admission to the desired college will be on the basis of CET. CET as in the common entrance test. And the third view circulating is Maharashtra government on Friday, 28 May, has sought 2 weeks' time to file an affidavit before the Bombay High Court in response to a petition challenging the state's decision to cancel the boards. तो boards cancel किया है, तो आगे क्या इसके ऊपर अभी भी चर्चा चल रही है हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में. So basically, there are three different views circulating in the state government. Let's see what are they. Let's understand the very first one, that is view one, result preparation. Now, parents and students, your SSC result this year, this academic year 2020-21, आपका जो SSC result है, that will be declared by 30th of June 2021, and for declaring this result of 10th standard, they are gonna follow the 30, 50, 30, 20 formula. Now, what exactly is a 50, 30, 20 formula? First of all, the SSC result will be declared out of 100 marks per subject, that is English 100, Hindi 100, Sanskrit 100, whatever it is, Hindi, Sanskrit, Hindi, French 100, Marathi 100, Maths 100, Science 100, and Social Studies, that is History, Geography combined 100. Out of 100 marks, 50 marks in per subject will be for the average performance of 9th standard. मतलब ही आपके 9th के फाइनल रिपोर्ट में जो भी आपका एवरेज मार्क्स था वो आउट ऑफ 100 था, वो आउट ऑफ 100 मार्क्स को 50 में कन्वर्ट करेंगे. So that will be the 50. 30 marks will be for the 10th standard internal exam conducted in the school. Which all exams were there, I will come to it later. And the 20 marks will be for the orals, book completion, assignment activities, etc. So in this way, 100 में से आपका जो SSC का 100 marks है, उसका 50 marks will be for 9th, 30 will be for 10th का exams, and 20 will be for internals, orals, assignments, and book completion. Let's understand about the first 50% weightage, which is on the basis of your 9th standard. Now, students and parents, as the schools already have the record of child's 9th standard final performance. Now, 9th standard का final performance का result already school के पास है. कैसे? अभी 9th में जब बच्चा था तभी वो प्री कोविड एरा था, तो क्योंकि वो प्री कोविड एरा था, स्कूल में सारे एग्जाम्स रेगुलरली हुए थे. अभी स्कूल में 9th के एग्जाम्स मतलब यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, सेमिस्टर 1 जो दिवाली के पहले होता है,
सेमिस्टर 2 जो फाइनल्स होता है, एंड स्कूल्स ने 9th में ओरल्स, असाइनमेंट्स, बुक कंप्लीशन एक्टिविटीज किए थे। तो ये बेसिस पे जो आपका 9th का रिपोर्ट कार्ड बना था, ओके, सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2 एवरेज निकाल के टोटल आउट ऑफ 100 था ना, वो आउट ऑफ 100 मार्क्स को उन लोग 50 में कन्वर्ट करेंगे। So each of the subject for which school had given marks out of 100 in 9th will be converted to 50 for the result preparation of 10th standard. So that is how you will get the first 50 marks. The next 30 marks will be given to you for your 10th standard examination. Abhi 10th ke kaun se examination? In the wake of COVID-19, the board examination of class 10 is cancelled. We all know that. But 30% of weightage in result will be for the 10th exams which a school has conducted. अभी स्कूल का 2 एग्जाम खास करके इंपॉर्टेंट है। एक है स्कूल का सेमिस्टर जो दिवाली के पहले हुआ था, एंड एक है स्कूल का प्रीलिम। ओके, अभी कोई कोई केसेस में हो सकता है स्कूल में 2 प्रीलिम लिया होगा या 3 प्रीलिम लिया होगा। तो बोर्ड ने क्लियर किया है 80 मार्क्स का सेमिस्टर, 80 मार्क्स का प्रीलिम्स। तो बेसिकली 80 मार्क्स के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में से जो बच्चे का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, आई रिपीट, जो बच्चे का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो 80 मार्क के पेपर को आउट ऑफ 30 कन्वर्ट करेंगे, एंड दैट इज हाउ द 30 मार्क्स विल बी गिवन टू यू फॉर द 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। सो 50 वाज फॉर 9th स्टैंडर्ड, 30 वाज फॉर 10th स्टैंडर्ड। वो 50 मार्क जो 9th का था वो कैसे कैलकुलेट किया? 100 को डायरेक्टली 50 में कन्वर्ट कर दिया। एंड जो 30 मार्क्स 10th का है वो कैसे कैलकुलेट किया? जो 80 मार्क्स का एग्जाम्स हुए थे उन 80 मार्क्स के एग्जाम्स को आउट ऑफ 30 कन्वर्ट किया, एंड अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो 50 was for 9th, 30 was for 10th, and a balance 20 marks will be for the internals, the orals, the book completion, the assignment completion which the child has done throughout the year of 10th standard. So basically it is the internal marks. So this way 50 marks for 9th, 30 marks for 10th ka written exams, internal school written exams, and 20 marks for the school's internal orals, assignments, book completion, and that is how your SSC result will be declared. मतलब फ्यूचर में किसी ने आपको पूछा कि मैंने एसएससी में कितना स्कोर किया है, ये रिजल्ट आपका परसेंटेज होगा बोलने के लिए कि मैंने एसएससी में इतना स्कोर किया है। लेकिन there's a but, there's a clause over here. अगर आपको कॉलेज में, डिजायर्ड कॉलेज में, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट टू गेट एडमिशन इन एन XYZ कॉलेज, इट्स माय एम्बिशन, इट्स माय ड्रीम, तो मेरा ये रिजल्ट कुछ काम का नहीं है, या फिर कह सकते हैं फिलहाल के लिए कुछ काम का नहीं है। Why am I saying so? Because अगर आपको आपके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को कंपलसरी सेकेंड क्राइटेरिया, सेकेंड व्यू, दैट इज CET देना पड़ेगा। तो बेसिकली टू गेट एडमिशन इन योर डिजायर्ड कॉलेजेस you need to give the CET. What is CET? CET is the common entrance test. A common entrance test will be conducted across the state of Maharashtra for the 11th standard admissions. Now this CET will be based on the 10th standard syllabus itself. It will be MCQ, that is multiple choice question based, and the exam will be conducted through OMR sheets. OMR sheets मतलब वो बबल वाला शीट जहां पे आपको नंबर्स करना 1 2 3 4 होता है, तो जो भी सही ऑप्शन है उसको सर्कल करना होता है। दिस CET विल बी 1 पेपर ओनली ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का 1 पेपर, सब सब्जेक्ट मिला के एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का, एंड इसका ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। लेकिन it is up to the child whether he wishes to give the CET or no. Now, what is my opinion? What is our opinion at Mahesh Tutorials? CET will be completely optional for student. So, should I opt for it? So, as an academician, my answer will be yes. One should opt for CET, as during the class 11th admission process, first preference will be given to those students who have given the CET. तो जिन बच्चों ने CET दिया है एंड जो बच्चे अच्छे मार्क्स से CET क्लियर करेंगे
उनको अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एक बार फर्स्ट प्रेफरेंस में सीईटी के बच्चों को एडमिशन मिल गया, उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने सीईटी नहीं दिया है उनके लिए एडमिशन चालू हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एसएससी रिजल्ट, दैट इज द 50-30-20 वाला रिजल्ट। उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन subject to seat availability, number one, and secondly it will be on the basis of SSC result merit also. तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या मुझे सीईटी देना चाहिए, तो मेरा आंसर विल बी यस, मुझे सीईटी देना चाहिए अगर मुझे अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। इज दैट क्लियर? And now the third view circulating is in the High Court, which is Maharashtra government on Friday 28 May sought 2 weeks time to file an affidavit before the Bombay High Court in response to a petition challenging the state's decision to cancel the class 10 boards. तो कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट को कि आपने 10th का एग्जाम कैंसिल किया तो व्हाट्स नेक्स्ट, एंड ऑल्सो an affidavit is to be filed stating detailed methodology on evaluation criteria. The court had sought a reply from the state on how it plans to evaluate the class 10 students. The court had passed a detailed order on May 20th. The further hearing is on Tuesday, 1st June 2021. The state has sought 2 weeks time as preparation and finalization of the affidavit draft is taking time, as due to the current lockdown only 15% staff is attending the work. So basically following are the news or the views circulating in the market in relation to the SSC results. जो कुछ भी है, we are there to support you at every stage, be it the CET preparation. Even for the CET preparation, we are there to help you out in the same. So I hope the session was useful. Kindly go through the entire video properly to get an understanding about all the scenarios which are circulating in the market. Stay home, stay safe. Thank you so much. Have a nice day, everyone.